CSE Academy Champapet Rangareddy District Telangana State welcomes you. CSE Academy Champapet Rangareddy District Telangana State आपका स्वागत करता है. This is the third activity in your PMG दिशा. The activity is your student outcome form. यह जो है PMG दिशा में तीसरा एक्टिविटी है और इसका नाम है स्टूडेंट आउटकम फॉर्म. Let us see that how we can complete this activity. इस एक्टिविटी में हमें google.com में जाना है और इसमें हमें PMG दिशा सिलेक्ट करना है. इसमें PMG दिशा में लॉगिन है. In this activity, first we need to go for google.com. In google.com, we need to type the PMG Disha. In PMG Disha, we are having login. We need to click the login. So here, actually, when we are going for login, first we need to click it here, and it is asking about the username and password. यहाँ पर वह username और password पूछेगा, तो जो स्टूडेंट है वह अपना यूजर नेम और पासवर्ड एंटर कर सकता है. जो यूजर नेम और पासवर्ड है वह ट्रेनिंग सेंटर के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा. So whatever the username and password that is provided by the training center, the student can go for entering it. So when the student is entering the user ID and password, he can able to log in it. So he need to go for this transaction activity. यहाँ पर हमें फिल आउटकम फॉर्म पे हमें जाना है. वी नीड टू गो फॉर फिल आउटकम फॉर्म. सो इन दिस वी नीड टू गो फॉर फिल आउटकम फॉर्म. सो व्हाट वी नीड टू डू, फर्स्ट वी नीड टू क्लिक द ट्रांजैक्शन. इन ट्रांजैक्शन वी आर हैविंग फिल आउटकम फॉर्म. हियर इट इज आस्किंग, सो दिस इट इज देयर. So depending upon whatever the things that are there with the student will be picking it yes or no. So use digital devices for accessing, creating, managing and sharing information. If the student is doing this activity, he will be pressing it yes. If he is not doing, he will be pressing it no. Use the internet or browser in an effective and responsive manner. So in this, the student can go for yes or no. Use digital locker. So yes or no. Use online G2C services, government to customer services. So depending upon the student having bank account, yes or no. So depending upon what are the information that is there with the student will be going for selecting it yes or no. Insurance. So whether the student is having the insurance, yes or no. Then have downloaded e-Gramin store app. Say suppose if you are going for yes, you need to select your mobile number. So in this case, our student, he has already downloaded it. He will be entering it. Then okay. Next, it is telling the transaction. We need to go for free payments of 1 rupee required to take a test, make a payment. So this is the simulation. So how the financial transaction takes place. First we need to go for make a payment. Here it is telling student name, amount to be paid, proceed to payment. यहाँ पर हमें दिया है enter payment demo at the rate of VPA in the below input field. So we need to select this and we need to copy it and we need to paste it here. Here payment mode, please enter the payment address to make the payment, credit or debit card. So we need to enter payment demo at the rate of VPA, virtual bank. By continue, you will be proceeding with the payment. So this is the transaction ID, this is the amount and this is the total amount. We need to go for continue. So here it is telling that enter OTP 8765 in the below input field. So whenever we are going for a transaction, OTP will be coming. So in our case, this is the OTP. So 8765. This is our OTP. So we have entered this one. यह OTP हमने एंटर कर दिया. पेमेंट सक्सेसफुल. योर पेमेंट हैज सक्सेसफुली प्रोसीड. हियर आर द डिटेल्स ऑफ दिस ट्रांजैक्शन फॉर योर रेफरेंस. तो ट्रांजैक्शन आईडी और अमाउंट
we need to do this activity 3 times. We need to complete 3 transactions. So same, we need to go for we need to enter payment demo at the rate of VPA in the input field. We need to continue it, and again here it is telling OTP. OTP is our 8765. Say when we are going for doing it in a real time, so there may be some other OTP, but this is just for practice purpose. It is just one activity that is provided from the PMGDISHA type. So proceed to payment. We have already completed the 2 payment. This is the 3rd one. So continue. Same, enter the OTP 8765. 8765 ये हमारा OTP है. और जब हम ये 3rd ये कर दिए, पेमेंट सक्सेसफुल, योर पेमेंट हैज बीन सक्सेसफुली प्रोसेस्ड, हियर आर द डिटेल्स ऑफ दिस ट्रांजैक्शन. तो यहाँ पर है बैक टू ट्रांजैक्शन, बैक टू डैशबोर्ड. फर्स्ट वी विल सी द ट्रांजैक्शंस. व्हेन वी आर गोइंग फॉर बैक टू ट्रांजैक्शन, इट इज टेलिंग ऑल द ट्रांजैक्शन नंबर्स, ट्रांजैक्शन डेट, initiate mode, transaction reference number, transaction status, transaction type, bank name or card name. This is your PG simulator. Okay, so minimum 3 transactions have been completed successfully. So student outcome form and transaction activity, this we have successfully completed. So this is the 3rd activity that we have successfully completed. तो पहला एक्टिविटी क्या था? पहला एक्टिविटी था क्रिएटिंग द ईमेल आईडी, दूसरा एक्टिविटी था वेरीफाई द ईमेल आईडी, और तीसरा एक्टिविटी है स्टूडेंट आउटकम फॉर्म. तो स्टूडेंट आउटकम फॉर्म ये डिपेंड करेगा स्टूडेंट के ऊपर. उसमें येस और नो दिया हुआ है, उसमें सिलेक्ट करना है कि क्या क्या चीज हमारे पास है येस, और जो नहीं है उसमें हमें नो करना है. तो हमारे जो स्टूडेंट का जो डिटेल था वो इस डेमो में हमने दिखाया. ठीक है, आपका जो डिटेल है वह इस डेमो की अपेक्षा अलग हो सकता है. योर ओन डिटेल मे बी डिफरेंट. You no need for copying it as it is, because your detail will be different as compared to this demo that is shown to you. Okay, thank you.